Hello everyone, welcome to the channel. So today we are going to start our chapter 6 in the series of chapter wise MCQs of the book Spectrum. Now already I have uploaded the 5 lectures. You can access that from the playlist section or the description of the video also. Now this chapter is going to be the political organizations that were found before the Indian National Congress. Now first of all, let me give you some of the information about this chapter, and then straight away we will move to the questions. Now this information is necessary for you to understand it first. Then आपके लिए at a later stage it will be easy to solve the questions. Now, the beginning of modern nationalism in India. It means, what does nationalism meant? Nationalism meant that the feeling of proudness for your own country. Okay. Now, what were the different factors that were responsible for the rise of the modern nationalism in India? First one was the worldwide upsurge. Worldwide upsurge किनके against में? So it was against the British imperialistic policies. ब्रिटिश इंडिया का जो इंपीरियलिज्म था, ब्रिटिश कॉलोनीज का जो इंपीरियलिज्म था, उसके अगेंस्ट रिसेंटमेंट स्टार्ट हो गया. नॉट ओनली अगेंस्ट द ब्रिटिश बट फ्रेंच कॉलोनीज के भी अगेंस्ट, एंड देन डच के अगेंस्ट भी ये स्टार्ट हो गया कि आप कंट्रीज को एक्वायर नहीं कर सकते हो, कोलोनियलाइजेशन नहीं कर सकते हो, कॉलोनीज नहीं बना सकते हो. ठीक है. सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन वॉज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ द ईयर 1789. Now, the French Revolution was based on the idea of rationalism. It was based on the idea of equality. It was based on the ideas of fraternity, liberty. And ये जितने भी यहाँ पे मैंने जितने भी ये नाम लिखे हैं, all of these were directly corresponding to freedom, which freedom was not there in the colonies and which was not a feature of the imperialistic policies. That is why the French Revolution also, बहुत सारा French Revolution के बाद भी resentment it occurred against the British India. Next important reason was reaction against the imperialistic forces. I have already explained. इसके अलावा भी एक reason था, which was the Indian Renaissance. Now what was this Indian Renaissance? Now this, who is known as the father of Indian Renaissance? सबसे पहले you need to know Raja Ram Mohan Roy is known as the father of the Indian Renaissance. Now this Indian Renaissance, which was inspired by the educated middle class, it focused against the evil practices of sati. It focused on the ideals of equality. It focused on the ideals of focus on the ideals which were against the child marriage, women education. All of these were the tenets of the Indian Renaissance. So Indian Renaissance was also an important factor. The third reason was the political, administrative and economic unification. How the political reasons were there. For example, revolt of 1857 आपने देखा, in which the zamindars too stood up with the common people of India, common peasants and laborers. क्यों एक साथ हुए थे वो? Due to the British oppressive policies. Now, administrative features were also there and economic unifications was done. Why it was done? It was done against the policies that continued to be of the Britishers. Now, क्या क्या policies थी? Policies of ring fence, जिसमें कि area acquire होता था. Ring fence की policy was introduced by Warren Hastings. Similar policy was subsidiary alliance. This subsidiary alliance was introduced by whom? The Lord Wellesley. Then was the doctrine of lapse by Lord Dalhousie. This was also a policy जिसके against जो था administrative and political unification हुआ. Now, what were the reasons of the economic unification? Now, their economy was the prime reason for which the British East India Company, it wanted to rule in India. So for the economic extraction, they used many of the policies. Some of them is permanent settlement. Now permanent settlement was introduced in the year 1793 by Lord Cornwallis. इसके अलावा रियोतवारी system was there. Then a Mahalwari system was there.
So all of these were the different tools, political, administrative, and economic tools that continuously oppressed the local people, which led to their unification. Then a major role was played by the press and literature also, because many of the vernacular languages were there. Other than vernacular languages, these press and literatures helped to develop the ideas, the modern ideas of self-government, democracy, the civil rights, etc. Now यही सब self government, democracy, etc. यही सारे tenets थे on which the political organizations that were established before 1885, मतलब prior to the Indian National Congress, जितनी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हुई थी उनका टारगेट इन्हीं सब के अराउंड फोकस करता था. ठीक है. देन द नेक्स्ट इज प्रोग्रेसिव कैरेक्टर ऑफ द सोशियो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट. ये तो हमने देखा ही था. देयर वेर वेरियस सोशल मूवमेंट आल्सो, रिलीजियस मूवमेंट आल्सो वेर देयर, एंड रिलीजियस मूवमेंट के साथ साथ पॉलिटिकल, सम ऑफ द पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूवमेंट वाज आल्सो देयर. ओके. नाउ let us see some of the political organizations that were formed before the formation of Indian National Congress. Now, this Indian National Congress was formed in the year 1885. So, it is but obvious that जितने भी ये political organizations मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी, वो सारी की सारी 1885 की है, and questions यहाँ से पूछे जाते हैं. ठीक है. Now, some of the organizations that were formed in Bengal. सबसे पहले तो बंग भाषा प्रशासिका सभा. Now this was formed not by Raja Ram Mohan Roy. Raja Ram Mohan Roy ने फॉर्म नहीं की थी. मेन पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन यही होता है. बट इट वाज फॉर्म्ड बाय द एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय, एंड ये फॉर्म हुई थी 1836 में. ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन वाज लैंड होल्डर सोसाइटी. दिस लैंड होल्डर सोसाइटी was formed by Devendranath Tagore, and the other name of landholder society was Zamindari Association. Now this is very important. Why it is important? Because what was the objective was this landholder society, it marked the beginning of an organized political activity, and it was the first organization to use the method of constitutional agitation, which was later used as a major tool by the Indian National Congress. ठीक है. Next important society was the Bengal British India Society, which was formed in the year 1843. And what was the objective of this organization was, it helped in the collection and dissemination, मतलब distribution of the information relating to the actual conditions of people that were living in India at that time. The next important association which was formed was East India Association, and it was formed in the year 1866 by Dadabhai Naroji. Okay, now Dadabhai Naroji formed this East India Association in London. Why in London? Because to discuss the Indian question and influence the public opinion in England for welfare of the Indian people. ठीक है. The next important was the Indian League. This Indian League was formed by Shishir Kumar Ghosh in the year 1875. Now, the main objective of the Indian League was to stimulate the sense of nationalism. Stimulate the sense of nationalism among the people of the country. Next important association was the Indian Association, which was led by Surendranath Banerjee. Okay, and this was also known as Indian Association of Calcutta. Other important name is Indian National Association. Okay, now it was formed in the year 1876, and this organization is also known as the precursor of the Indian National Congress. Now, what were the aim of this Indian National Association? सबसे पहला was to create a strong public opinion. तो public opinion किस चीज पे? तो public opinion on the political questions. Second important thing that it aimed to do was unify the Indian people for a common political program. Common political program का ये मतलब है कि सारे Indians को unite करना, ताकि वो एक
पॉलिटिकल अपनी पॉलिटिकल डिमांड्स के लिए एक साथ हो सके, rather than they do not divide themselves among different sections. ठीक है. Now, also this Indian association, it protested against the reduction of age limit in 1877 for the candidates of the Indian Civil Services examination. This Indian association also aimed and also tried for the Indianization of the higher administrative forces. Now, Indianization of higher administrative forces का administrative post का मतलब है कि more and more Indians, इनका ये मानना था कि there should be more and more Indians in the higher level of the government. Now, some of the associations that were formed in Bombay, the most important of it is Pune Sarvajanik Sabha. It was formed in the year 1867 by M.G. Ranade. ठीक है. Now, this organization aimed to bridge the gap between government and the common people. Okay. Next important association was the Bombay Presidency Association. Now, this Bombay Presidency Association was started in the year 1885 by Badruddin Tayyabji. Next important one was Firoz Shah Mehta and K.T. Telang. Okay. Now, some of the association that was formed in Madras is Madras Mahajan Sabha in 1884. Now, this was formed by M. Viragavachari, B. Subramaniam Iyer and P. Anand Charlo. Okay. Now, what were these organizations focused on? या इनके कैंपेन में क्या क्या था? सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू दिस पार्ट ऑफ द थिंग्स दैट इंपोर्ट ड्यूटी कॉटन पे थी, उसके अगेंस्ट था, आर्म्स एक्ट के इंट्रोडक्शन के अगेंस्ट था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन 1878 विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड लिटन, इसके अगेंस्ट था, सपोर्ट ऑफ द इल्बर्ट बिल. व्हाट वाज इल्बर्ट बिल? दैट इट वाज इंट्रोड्यूस्ड विथ अ एम, सो दैट उसमें क्या था प्रोविजन इल्बर्ट बिल में कि इंडियन जजेस had the power to try or convict the crimes committed by Europeans also. मतलब यूरोपियंस को इंडियन जजेस भी ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस वाज द मोटो ऑफ द इल्बर्ट बिल व्हिच वाज स्ट्रांगली अपोज्ड, ठीक है, बाय द ब्रिटिशर्स, एंड ऑन द अदर हैंड दिस वाज सपोर्टेड बाय इंडियंस. ओके, लेट्स नाउ स्ट्रेट अवे मूव टू द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. Let us start with the questions now. Now, the first question is, the first session of the Congress was held in Bombay in 1885 and presided over by Dadabhai Naroji. ठीक है. Now, let me tell you, अभी मैंने बताया नहीं है, ये मैं next chapter में बताऊंगा, but I have included this chapter. Now, the first session of the Congress was held in Bombay in 1885. ये तो सही है यहाँ पे, but it was not presided by Dadabhai Naroji, but it was presided by W.C. Banerjee. ठीक है. So, the first statement is wrong. Now, second statement है हमारा, कादम्बिनी गांगुली was the first woman president of the Congress. No, not कादम्बिनी गांगुली, but Annie Besant was the first woman president of Congress. ठीक है. एंड अगर मैं बात करूं फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट, शी वॉज सरोजनी नायडू इन द ईयर 1925 के कानपुर सेशन को प्रिसाइड किया था इन्होंने. ओके. Let's now move to the next question. The first session of Congress was held at Gokuldas Tejpal Sanskrit College in Bombay in December 1885. So this statement is absolutely correct. हमें यहाँ पे correct statement बताना है. So 3 is the correct answer. Let's now move to the next question. Now, this organization is consider the following statement regarding the Servant of India Society. Now, it organized campaign to promote education, healthcare and fight against the social evils. Okay. ये पहला statement है. So this is absolutely correct. The Servants of India Society was formed by Gopal Krishna Gokhale and it was formed in the year 1905. The publication of Hitavada newspaper was started by the members of this organization. Absolutely correct. Hitavada newspaper was started by this only and they had the progressive ideas. So ये भी statement हमारा बिल्कुल सही है. Next है, it merged with the Indian National Congress during the protest against the partition of Bengal. No, this did not merge with the Indian National Congress. Third statement हमारा incorrect है. So the correct statement will be
1 and 2 only. No. Next is about the East India Association. So let us see the question. Now, Dadabhai Naoroji founded the East India Association in the year 1866 in India. अब देखो मैंने बताया था आपको, Dadabhai Naoroji founded the East India Association not in India but in London. Why it was formed? To raise the voice of public welfare among the people living in England. So हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो फर्स्ट वन तो इनकरेक्ट है. लेट अस सी द सेकंड स्टेटमेंट. The association aimed to raise the awareness among the people of UK about the conditions in India and sought the popular support among the British for well-being of the Indians. Absolutely correct statement है हमारा ये. थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं. The East India Association is recognized as the predecessor association to the India's National Congress. बिल्कुल करेक्ट है ये भी स्टेटमेंट हमारा. No, fourth statement है the East India Association had presence in Bombay only. No, this is absolutely incorrect. The association was also spread to the cities such as Madras, such as Calcutta. Okay, so the fourth statement is not correct. First भी incorrect है, तो correct statement हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 and 3 हो जाएगा. Okay, so 3 का हमारा A आंसर है. Let us now move to the next question, that is question number 4. Now we have to arrange these following associations in the chronological order. सबसे पहले तो है इंडियन लीग, देन है हमारी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन. सबके बारे में मैंने आपको बता दिया है. तो इनमें से सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन फॉर्म हुई थी इन द ईयर 1866. ये इस्टेब्लिश हुई थी लंदन में एंड इट वाज इस्टेब्लिश बाय दादा भाई नारोजी. ठीक है, सो सबसे पहले तो हमारी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इस्टेब्लिश हुई थी. देन अगर इसमें हम देखें पुणे सार्वजनिक सभा, आई टोल्ड यू अराउंड 1870s के अराउंड में पुणे सार्वजनिक सभा वाज फॉर्म्ड बाय एमजी रनाडे. नाउ दिस एमजी रनाडे फॉर्म दी पुणे सार्वजनिक सभा एंड पुणे सार्वजनिक सभा का काम क्या था? इनका काम था टू एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द पीपल. नेक्स्ट हमारी थी इंडियन लीग. इंडियन लीग वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1875 बाय शिशिर कुमार घोष. And what was the aim of this organization? So the aim of Indian League was to foster the feeling of nationalism in Indian people. Next was Bombay Presidency Association. Just कांग्रेस के फॉर्मेशन के टाइम पे ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई थी इन द ईयर 1885. Who established it? तो फिरोज शाह मेहता established it. केटी तेलांग थे एंड केटी तेलांग के साथ बदरुद्दीन तैयबजी वाज आल्सो देयर. सो हमारा सेकंड सबसे पहला है, 2 ऑप्शन में है. देन केम हमारा थर्ड, 2 3 4 1. सो बी इज लाइकली टू बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. सो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now this question is regarding the Zamindari Association which was formed in the year around 1839. ठीक है, सो देखते हैं. Now it was established in 1838 to represent the interest of zamindar in Bengal, Bihar and Odisha. Absolutely true है, correct statement है. And it was also the first organization, मैंने आपको बताया, which introduced the constitutional agitation as a means. So first statement तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है and it was formed by देवेंद्रनाथ टैगोर. सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं अपना, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें. द एसोसिएशन मार्क द बिगिनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एक्टिविटी इन इंडिया यूजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड फॉर ग्रीवांसेस. एब्सोल्युटली करेक्ट, सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है. नेक्स्ट इज इट मर्ज्ड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 टू एक्सपैंड इट्स इन्फ्लुएंस. सो the Zamindari Association did not merge with the Indian National Congress, but Zamindari Association merge हुई थी with British India Society. It merged with the British India Society in which year? So it was merged in 1851. जब Zamindari Association it merged with the British India Society in 1851, it was known as the British India Association.
ठीक है, सो द थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, थर्ड को हम एलिमिनेट कर देंगे। वी नो दैट 1 and 2 इज राइट, सो ए हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, हालांकि लेट अस सी द फोर्थ स्टेटमेंट एज वेल। The Zamindari Association was popularly known as the British India Association. So this statement is absolutely incorrect because the Zamindari Association was known as Landholders Society and not British India Association. तो फोर्थ स्टेटमेंट हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, सो ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। Let's now move to the next question. Consider the following statement about the Landholder Society, which was formed in the year 1837. Again, Landholder Society पे question है. It was it was a group formed by the political leaders in India. No, it was not formed by the political leaders, but it was formed by the group of zamindars who were focused to protect their own interests due to the British oppression. ठीक है, so the first statement is absolutely incorrect. Next is the main objective was to promote agricultural productivity in Bengal, Bihar and Odisha. No, it was not regarding the agricultural productivity, but it was for protecting the legal and economic rights, of zamindars. ठीक है, सो सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, the society was established by Radhakant Deb and Prasanna Kumar Tagore. So this statement is true. Initially, Radhakant Deb and Prasanna Kumar Tagore were most instrumental in forming the Landholder Society. So the third statement is right. Fourth statement, it marked the beginning of the Industrial Revolution in India. So it was nowhere related to Industrial Revolution, but ये related किससे था? Land owners या जमींदार्स के राइट्स के रिगार्डिंग थी ऑर्गेनाइजेशन, एंड इसका और कोई मतलब नहीं था। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है हमारा। करेक्ट स्टेटमेंट हमसे यहाँ पे पूछा है, तो हमारा ओनली वन स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। ठीक है, लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ विथ रेफरेंस टू द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। हमें अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। So it was founded by Surendranath Banerjee and Anand Mohan Bose to promote the interest of landlords. ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। Why? Because the Indian Association was founded to counter the pro-landlord policies. They were against the benefits that were given to the landlords. So this organization was against the landlords, not for the landlords. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट जैसे हुआ तो हमें इनकरेक्ट ही बताना है, तो हाँ फर्स्ट तो होगा। नेक्स्ट इज द एसोसिएशन अपोज द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एंड कैंपेन फॉर इट्स एबॉलिशन। नो, इट डिड नॉट अपोज द इंडियन सर्विसेज एग्जामिनेशन, बट इन्होंने अपोज किया था रिगार्डिंग द रिडक्शन ऑफ एज इन दी इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। एग्जाम को इन्होंने कभी भी अपोज नहीं किया था। ठीक है, सो द सेकेंड वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। थर्ड है, इट ऑर्गेनाइज्ड एन ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस टू प्रमोट यूनिटी एंड नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स अमंग द इंडियंस। एब्सोल्युटली करेक्ट है। इट एम्ड एट अचीविंग द पॉलिटिकल यूनिटी एंड पॉलिटिकल brotherhood regarding common matters. So the third statement is incorrect. Third तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। Next is the Indian Association merged with the Indian National Congress in 1886. Absolutely correct. मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता या नेशनल एसोसिएशन ये बाद में जाके इंडियन कांग्रेस नेशनल कांग्रेस में ये मर्ज हुई थी। तो फोर्थ वन इज ऑल्सो करेक्ट। हमें यहाँ पे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो ओनली द 1 and 2 यही दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हैं जो कि इनकरेक्ट है। ठीक है, लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग हमारा इल्बर्ट बिल। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग with respect to Indian history, consider the following statement. The Indian National Congress adopted a resolution in support of the Ilbert during its early sessions. Now,
आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बताया इल्बर्ट बिल वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1881, ठीक है, ये बिल 1881 में आया था, ठीक है। इट वाज इंट्रोड्यूस, सॉरी नॉट 1881 बट 1883 में ये बिल आया था। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वॉइसरॉय, हु वाज द वॉइसरॉय एट दैट टाइम, वॉइसरॉय रिपन, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे सपोर्ट कर सकती है इल्बर्ट बिल को, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म ही 1885 में हुई थी? तो पहला स्टेटमेंट तो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है हमारा। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। द इल्बर्ट बिल प्रपोज टू एम्पावर इंडियन मजिस्ट्रेट और सेशन जज टू ट्राई चार्जेस अगेंस्ट द यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट्स चैलेंजिंग द रेशियल प्रिविलेजेस दैट वेयर गिवन। सो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि यही मेन एम था, एंड दिस इल्बर्ट बिल वाज ग्रेटली इन द सपोर्ट ऑफ द, इट वाज ग्रेटली सपोर्टेड बाय द प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज फॉर्म, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा द स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द रहनुमाई मजदयासन सभा। नाउ इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1851 in Bombay by reform-minded Parsis, including Dadabhai Naroji and others. So this society was absolutely correct statement है, 1851 में फॉर्म हुई थी, and it was for the promotion and progressive intent of the Parsis community, ठीक है, and it was founded by Dadabhai Naroji. इसके साथ साथ SS Bengali भी was a part of this organization. So the first one is absolutely correct. हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है यहाँ पे। सेकेंड इज द सबाज मेन माउथपीस रास्त गोफर वॉज लॉन्च टू एडवोकेट द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स अमंग द पारसी कम्युनिटी। नो, रास्त गोफार का मतलब होता था द ट्रूथ टेलर। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है हमारा, ठीक है, एंड इट्स गोल वॉज टू मॉडर्नाइज द पारसी सोसाइटी। सो ये सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है। Next is the Sabha opposed the introduction of Western education for Parsi youth, fearing it would dilute their traditional values. Now, all of these modern sabhas or associations that were formed were influenced by the Western idea. ठीक है? So this Sabha was a pro-reform and it strongly recommended the Western education, particularly Western education में भी English education among the मीन्स ऑफ एम्पावरमेंट, ठीक है। सो ये हमारा स्टेटमेंट एब्सोल्युटली गलत है कि द सभा अपोज द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, ठीक है। इट्स सपोर्टेड, इट नॉट अपोज बट इट्स सपोर्टेड। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो द थर्ड स्टेटमेंट इज द ओनली स्टेटमेंट दैट इज इनकरेक्ट। सो सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। So with this I have told you some of the most important questions and I hope कि अगर आप explanation का पार्ट पढ़ोगे and some of the MCQs अगर आप solve करते हो जो मैंने अभी प्रोवाइड किए हैं तो आपका अच्छा रिवीजन हो गया होगा इस चैप्टर का। अदर देन दैट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि चैनल की मेंबरशिप आप ले सकते हो, ठीक है, एंड मुझे सपोर्ट कर सकते हो टू प्रोवाइड यू विद द बेस्ट कंटेंट दैट आई कैन, ठीक है। टिल देन कीप स्टडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो दैट मेंबरशिप इज जस्ट 29 रुपीज़ पर मंथ। सो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उसके। यू कैन जस्ट सपोर्ट मी बाय पेइंग दिस मिनिमल अमाउंट, ठीक है। इट वुड बी ग्रेटली हेल्पफुल फॉर मी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग।